Good evening, guys. A very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about modern forms of communication. Like in today's world, we can not even think about कि भाई businesses जो हैं वो smoothly run कर सकते हैं without जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उनके बगैर. लेट सपोज एक भी दिन अगर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कुछ भी हुई है, इम्प्रूवमेंट्स जो हुई हैं, ये जो मेजर चेंज आया टेक्नोलॉजी में, वो एक दिन के लिए भी अगर गायब हो जाए ना, सो वी कांट इवन थिंक ऑफ कि भाई बिजनेस हमारे रन कर सकते हैं स्मूथली. और वो जिस प्रकार का रेवेन्यू आजकल अर्न कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, क्या वो उस तरीके का रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे जो रन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दोज मेजर एट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डिफरेंट एरियाज? नहीं कर पाएंगे. So definitely in this video specifically we're going to talk about the major changes in technology or the technological advancement in the area of communication. So let's talk about the modern forms of communication now कि भाई ट्रेडिशनल वे होता था एक कम्युनिकेशन का और अब एक तरीका आज का है मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का जो वाइडली यूज्ड और पॉपुलर है इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑल्सो. सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि भाई सोशल मीडिया, और ये सिर्फ जनरल नहीं कि भाई हम इंडिविजुअली ही यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम सोशल मीडिया में हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फेसबुक, बट बड़े बड़े बिजनेसेस भी आजकल अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं विजिबल रख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं. सो दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम, दे आर यूजिंग फेसबुक, दे आर यूजिंग ट्विटर, दे आर यूजिंग स्नैपचैट. नॉट स्नैपचैट स्पेसिफिकली, कुछ करते भी होंगे, बट मेजरली जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर बहुत यूज़ करते हैं. सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स is one of the main, we can say, the technological advancement which we can see and which is quite obvious in today's world. Platforms like WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat that allow users to upload and upload videos and pictures with their friends and followers, and not only that कि भाई वो photos upload कर सकते हैं, videos upload कर सकते हैं, they can even chat through these social media platform. So definitely it's a new means of communication. ईमेल की अगर हम बात करें, लाइक इफ़ यू वर्किंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इफ़ यू हैव वर्कड इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि भाई बिजनेस में अगर आपको कम्युनिकेट करनी है ना वेरियस चीज़ें, चाहे वो आपको अपने मेन मैनेजर से किसी लीव को लेकर बात करनी हो, आपको अपनी हायर अथॉरिटी से किसी चीज़ को लेकर बात करनी हो, कोई इशू या कोई कंसर्न कहीं ना कहीं व्यक्त करना हो अपना, सो all you can use in the business world is email. So if you're working in a business environment and if you have worked in a business environment, you're definitely aware of this, how useful it is. Maybe you've used Gmail for that, maybe you've used Outlook for that matter. So it's a method of transmitting and receiving messages. When we talk about email, आप सभी को पता होगा, मैं खुद कहता हूँ कि भाई आप मुझे email करके अपनी queries बताओ, जो कुछ भी आपको कहना है आप वो कह सकते हो email के थ्रू. तो मैंने आपको अपनी email ID भी दे रखी है, and through that you can send me your message anytime and I can see that message anytime and I can reply to that. So it is a method of basically transmitting and receiving messages using electronic devices, and that's why the name itself is email, that is electronic mail. So basically you're transmitting and receiving messages using electronic devices. All you need here is internet. So email operates across computer networks. एक simple सी बात है, primarily the internet, and it also uses local area networks. ईमेल क्रिएट्स डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ये क्रिएट कर देती कि भैया अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हो ना, तो भाई ये फ्यूचर के लिए भी आप रेफर कर सकते हो कि भाई हमने इस व्यक्ति को, इस पर्सन को ईमेल लिखी थी, तो हमारे पास एक वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है. So it creates a documented proof also in written format which companies can refer anytime in future if they want. So you can send or receive email at any time. There is no time constraint also. So without having any concern of sender and receiver being present at that moment, ki bhai in order to receive this you have to be present there, in order to send this I have to be here, and in order to receive that particular message you have to be there at the same time. No, there is no such thing. So you can send or receive email at any time. So there is no time constraint also, and there is no concern also of sender and receiver being present at that moment.
Then we have video conferencing. Like you can connect with people across the globe with so many video conferencing apps, like you have Zoom, Skype, Google Meet and various kind of meetings जो होती हैं, webinars होते हैं, which basically allow the users to both see and hear no matter where they are. All they need is an internet connection. So conferences, meetings, online classes, and so many applications of video conferences that we can widely see in today's world, especially during the pandemic time. जितना यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ है वो आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा वाइडली यूज्ड हुआ है ये किसी भी एरिया में, अगर हम इसको देखें, क्योंकि उस टाइम तो हर चीज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रही थी, मेजर चीज़ें. Then we have voice assistants, also various voice assistants apps भी हैं जो कि मदद करते हैं यूज़र जस्ट वॉइस इंस्ट्रक्शन से काफ़ी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है कई चीज़ों की, और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी अप्लाई करवा सकता है. तो कई तरीके के वॉइस असिस्टेंट्स भी देखने को मिलते हैं. सो these are some modern forms of communication, major modern forms of communication जो आप देख सकते हैं मोटे तौर पर. Now there is one homework for you also. So now can you tell me some more, like can you tell me some more modern forms of communication? And that's your homework. You have to tell this in the comment section. So I'm waiting. Thank you so much and keep studying. Take care.